Assalamu alaikum. I hope my screen is visible, my voice is audible. If it is, write yes in the chat box. I would appreciate if everyone restricts themselves to asking questions only related to the topic as and when I ask you to do so. Other than that, please ensure that you are observing what I'm doing. You are asking questions only when needed and only to the point related to the chapter that we are discussing. Equation of circles and its properties is the topic for today. So before we start off how to find the equation of a circle, it is extremely important to first understand the properties of the circle. So this is a circle. This is the center of the circle. This is the radius. This is a diameter. This is a sector. This is a segment. This line is a chord. This is an arc length. And the whole of this is circumference. Now I will be explaining each and every terminology and I will dictate it. I want you all to start writing it. Center is a point. Center is a point from which the circle is drawn. Center is a point from which the circle is drawn. Circumference. Circumference is the outer boundary of the circle. Circumference is the outer boundary of the circle. Circumference is the outer boundary of the circle. Radius. In fact, before radius, write arc length. Arc length is part of circumference of circle. Arc length is part of circumference of the circle. Arc length is part of circumference of the circle.
Radius. Radius is a line drawn from the center of the circle till the arc. Radius is a line drawn from the center of the circle till the arc. Chord is a line that touches the circumference twice. Chord is a line that touches the circumference twice. It divides the circle into two parts. It divides the circle into two parts. Minor segment and major segment. It divides the circle into two parts, minor segment and major segment. Diameter is a chord that passes through the center of the circle. Diameter is a chord that passes through the center of the circle. It divides the circle into two equal halves. It divides the circle into two equal halves. Diameter is a chord that passes through the center of the circle. It divides the chord into two equal halves and is twice the radius. And it is twice the radius. Diameter is a chord that passes through the center of the circle. It divides the circle into two equal halves and is twice the radius. And is twice the radius. Segment is the area bounded by the chord and the arc length. Segment is the area bounded by the chord and the arc length.
Segment is the area bounded by the chord and the arc length. Minor segment is the smaller part of the circle. Minor segment is the smaller part of the circle. And the major segment is the bigger part of the circle. Minor segment is the smaller part of the circle. Major segment is the bigger part of the circle. Sector is the area bounded by two radii. रेडियस का प्लूरल रेडाई होता है. Is the area bounded by two radii and the arc length is the area bounded by two radii and the arc length. ये पिज्जा स्लाइस जैसा होता है. जो पिज्जा की स्लाइस होती है, it is the sector of the circle. It is the area bounded by two radii. Radius का plural is radii, two radii, and the arc length. Tangent Tangent is a line that touches the circumference of the circle once. Tangent is a line that touches the circumference of the circle once. The point where the radius and tangent intersects makes a 90-degree angle. The point where the radius and the tangent intersects makes a 90-degree angle. The point where the radius and tangent intersects makes a 90-degree angle. Semicircle is half of circle. Semicircle is half of circle. It is the area bounded by
It is the area bounded by diameter and arc length. It is the area bounded by the diameter and the arc length. Quadrant. Quadrant is 1/4 of a circle. Quadrant is 1/4 of a circle. It is a sector of 90-degree angle. It is a sector of 90-degree angle. It is a sector of 90-degree angle. So radius, arc length, area bounded by two radii and arc length is a sector. लेकिन ऐसा sector जिसका angle 90 डिग्री हो वो quadrant बन जाता है. और quadrant 1/4 of a circle होता है, semicircle half of circle होता है. Concentric circles. Concentric circles. If two or more circles are drawn from the same radius, if two or more circles are drawn from same center but different radius, if two or more circles are drawn from the same center but different radius, are referred to as concentric circle. If two or more circles are drawn from same center but have different radius, they are referred to as concentric circles. If two or more circles have the same center but different radius, are referred to as concentric circles.
Next, cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral is a quadrilateral which is inscribed inside a circle. Cyclic quadrilateral is a quadrilateral which is inscribed inside a circle such that all its edges touches the circumference of the circle. Cyclic quadrilateral is a quadrilateral which is inscribed inside a circle such that all its vertices touches the circumference of the circle. Concentric circles के बारे में मैंने कहा कि if two or more circles are drawn from the same center but have a different radius, they are referred to as concentric circles. Wasif, Bilal, Shahir, Alina, have you all written concentric circles? Cyclic quadrilateral is a quadrilateral which is inscribed inside a circle such that all its vertices touches the circumference of the circle. मैं 1 मिनट के लिए म्यूट हूं. आई एम म्यूट फॉर अ मिनट. Cyclic quadrilateral is a quadrilateral inscribed in a circle such that all its vertices touches the circumference of the circle.
Circumcircle. Circumcircle is a circle. Circumcircle is a circle such that a triangle is inscribed into it. Circumcircle is a circle such that a triangle is inscribed into it, such that all its vertices, such that all its vertices touches the circumference of the circle. Circumcircle is a circle such that a triangle is inscribed into it, such that a triangle is inscribed into it in such a manner that all its vertices touches the circumference of the circle. In circle is a circle which is inscribed inside a triangle. In circle is a circle which is inscribed inside a triangle, such that such that each side of triangle is such that each side of triangle is tangent to the circle. In circle is a circle. In circle is a circle which is inscribed inside a triangle, such that each side of triangle is tangent to the circle. Such that each side of the triangle is inscribed. Uh, in circle is a circle which is inscribed inside a triangle, such that each side of triangle is tangent to the circle. Such that each side of the triangle is tangent to the circle. Are all these terminologies clear to everyone? Now I am showing you all the diagrams one by one. If you have not drawn them, please start drawing them and be quick in drawing them so that we can proceed.
बेटा मैंने सर्कम सर्कल के बारे में बोला था. सर्कम सर्कल is a circle such that a triangle is inscribed into it in such a manner that all the vertices of the triangle are touch the circumference of the circle. If you have drawn all diagrams, write drawn all so that we may move on. बेटा इन सर्कल के बारे में मैंने बोला था, an in circle is a circle that is inscribed inside a triangle such that each side of the triangle is tangent to the circle. Such that each side of the triangle is tangent to the circle. Shall we please proceed? तो ये सारी जो थी चीजें, these were the properties of the circle. क्योंकि आपको इवेंचुअली ये सारी टर्मिनोलॉजीज हो सकता है कहीं ना कहीं अप्लाई करनी पड़ जाए, इसलिए इन सबसे फेमिलियर होना बहुत जरूरी है. सो वंस हमें ये प्रॉपर्टीज एंड ये टर्मिनोलॉजीज हमने फेमिलियराइज हो गए हम लोग, सो अब हम मूव हो सकेंगे इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स पर. इक्वेशन ऑफ सर्कल्स. जिस तरह लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लीनियर की जनरल फॉर्म है. y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म है. इसी तरह द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल is x minus h, the whole thing square, plus y minus k, the whole thing square, is equals to r square, where h comma k is the center of the circle and r
is the radius of the circle. I hope everyone has copied this. So if you are told that find the equation of the circle with the center 2 comma 3 and radius 7 centimeters. So all we need to do is x minus 2 the whole thing square plus y minus 3 the whole thing square is 7 square. बेटा x and y तो x and y होता है ना. X minus 2 square y minus 3 square is 49. If this is clear, write clear in the chat box. And if you have copied everything that is written on the screen, write copied in the chat box. अगर सिर्फ जनरल फॉर्म है तो एक्सपैंड करने की अफान जरूरत नहीं है. अभी मैं आगे आऊंगा तो एक्सपैंड भी करके दिखाऊंगा. Let's say you are told that find the equation of the circle with center 1 comma 5 and radius 3 centimeters. चलिए फॉर्म करिए इक्वेशन. यूनिट्स में कर लें शुजा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप यूनिट्स लिखना चाहते हैं यूनिट्स लिख लें, आई डोंट माइंड. Please share your answers in the chat box. Please share your answers in the chat box.
So x minus 1 square plus y minus 5 square is equals to 3 square, which is same as x minus 1 square plus y minus 5 square is 9. All right, bus. I need your attention once again. I need your attention once again. ये जिस तरीके से हमने आंसर दिया है ना, इसको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल भी बोलते हैं. सो दिस इज द कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. अगर मैं इसको एक्सपैंड कर लूं, is x square minus 2x plus 1, y square minus 10y plus 25, minus 9 is 0. So x square minus 2x plus y square minus 10y plus 1 plus 25 minus 9. इस फॉर्म में भी इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपको दी हुई हो सकती है. ये एक्सपैंडेड फॉर्म है ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल. दिस इज द इक्वेशन, एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. तो हो सकता है आपको इस फॉर्म में निकालना हो सकता है आपको कंप्लीटेड फॉर्म में निकालना हो. क्वेश्चन साइलेंट है, आपकी मर्जी है. क्वेश्चन ने बताया है कहां तक जाना है, तो वहां तक जाना पड़ेगा. नहीं बेटा, 17 है ना. दिस इज 1 प्लस 25 माइनस 9 इज 17, नॉट 16. यूसुफ अलिशबा, आप लोगों ने +1 नहीं किया. इट इज 17, नॉट 16. आई होप आई एम क्लियर एवरीवन. सबको इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाने आ गई. Let's say you are told to find the equation of the following circle. The center is 5 comma 4, radius is 2. They have given a diagrammatical representation and you are supposed to find the equation of the circle. Kindly do so. फिर मैं करता हूं. जी खिजर, आहिस्ते आहिस्ते आ रहा हूं सारी चीजों पे, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा. यू विल हैव टू वेट अ बिट प्लीज.
दोनों फॉर्म में दे दें, एक्सपैंडेड फॉर्म में भी दे दें और कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में भी दे दें। एक्सपैंडेड फॉर्म में भी दे दें और कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में भी दे दें। So x minus 5 square, y minus 4 square is 2 square. X minus 5 square, y minus 4 square is 4. X square minus 10x plus 25. Y square minus 8y plus 16 minus 4 is 0. X square minus 10x, y square minus 8y plus 25 plus 16 minus 4, that is 37 is 0. Are you all done? तो अगर आपको बोला है find the radius and center of the circle from the following equations. चलें, कोशिश करें इन सब में रेडियस और सेंटर ऑफ द सर्कल निकालें। आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स, फिर मैं डिस्कस करता हूं।
So the first one, center is 3 comma 1, radius is 5. Second one, radius is -1 comma center is -1 comma -1, radius is 6. In the third one, 5 comma -2 and radius is 4. In the fourth one, -2 comma 7, radius is 7. In the fifth one, I need your attention, everyone. For the fifth one, I need everyone to concentrate, please. सबसे पहले हम इस जनरल फॉर्म को कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे लगेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ए की जगह x, बी की जगह 1, जो इंट्रोड्यूस किया उसका प्लस स्क्वायर उसका माइनस स्क्वायर. इसका कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म y स्क्वायर, बीच में माइनस है, 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड देन कंटिन्यू द इक्वेशन. a की जगह y, b की जगह 3, यहां 2 होगा, यहां 2 होगा, यहां 2 होगा. सो यहां से यहां तक एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x प्लस 2 द होल थिंग स्क्वायर -4. यहां से यहां तक एक और परफेक्ट स्क्वायर बन गया, y minus 3 the whole thing square minus 9 is 70. X plus 2 square, y minus 3 square, minus 4 minus 9 is minus 13 is 17. I hope everyone is following me. X plus 2 square, y minus 3 square, 17 plus 13. X plus 2 square, y minus 3 square is 30. So center हो गया -2 comma 3, radius हो गया under root of 30. And under root of 30 is the most simplified form. इससे ज्यादा simplify नहीं हो रहा, वरना surds apply हो जाता. I hope I'm clear. इसको कंपेयर करके करना ना बड़ा लंबा हो जाएगा. इसको कंपेयर करके करना विल बी वेरी लॉन्ग. इसीलिए याद है मैंने जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ाया था तो मैंने दोनों तरीके पढ़ाए, कंपेयरिंग वाला और ट्रेडिशनल वाला. और मैंने आपसे कहा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप लोग रियलाइज करेंगे कब ट्रेडिशनल मेथड विल बी टाइम सेवर एंड कब लॉन्ग वाला मेथड विल बी टाइम सेवर. बेटा -h कॉमा k सेंटर है ना, तो इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज होगा. 2 की साइन चेंज हुई तो -2 हो गई, -3 की साइन चेंज हुई 3 हो गई. एंड रेडियस इज अंडर रूट ऑफ 30.
कंपेयर करने से बड़ा लंबा हो जाएगा। ट्रेडिशनल मेथड विल बी बेटर। स्क्रॉल अप करके क्या देखना है भाई? बेटा -13 था ना, -13 जब यहां जाएगा तो +13 हो जाएगा। जब हमारे पास कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म होती है, x माइनस एच द होल थिंग स्क्वायर, y माइनस के द होल थिंग स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h कॉमा के सेंटर होता है, r रेडियस होता है। तो हर चीज में ये अंडर रूट ही तो हो रहा है। सारी देखो, सारी देखो। अंडर रूट ऑफ 25, 5। अंडर रूट ऑफ 36, 6। अंडर रूट ऑफ 16, 4। अंडर रूट ऑफ 49, 7। यहां हमें जनरल फॉर्म से कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा, एंड वंस कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में हमने जब कन्वर्ट कर लिया तो ये हो गया। तो अब इस बात को क्लियर कर लें दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर तो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म है, so it is x minus h the whole thing square plus y minus k the whole thing square is r square. h comma k is the center. तो अगर अगर कोई इसको इस तरह लिख रहा है x प्लस एच द होल थिंग स्क्वायर, y प्लस के द होल थिंग स्क्वायर इज आर स्क्वायर, तो उसके लिए सेंटर क्या हो जाएगा? -h कॉमा -k। अब आपने जिस फॉर्म में लिखा है उस पर डिपेंड करता है। रेडियस इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, सो आर। तो अगर हमारे पास अंडर रूट ऑफ 30 आया है तो रेडियस अंडर रूट ऑफ 30 हो जाएगा ना भाई। क्या अब ये बात क्लियर हो गई है? इज एवरीवन कंफर्टेबल नाउ? और दिस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू सी, ये जनरल फॉर्म जो कि एक्सपैंडेड फॉर्म है। ये कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म है। जनरल फॉर्म से कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो आप सेंटर और रेडियस निकाल सकेंगे। वंस द जनरल फॉर्म is converted to completed square form, we will be able to find the center and the radius. I hope I am clear to all of you now. अभी मैंने आपको पूरी बात क्लियर कर दी ना शुजा, आई थिंक अब तो क्लियर हो जानी चाहिए ना बात। मैंने उस वक्त आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया ये जनरल फॉर्म है, फिर मैंने आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर किया एक्सपैंडेड फॉर्म क्या है, और फिर मैंने आपको बताया जो जनरल फॉर्म मैंने पहले बताई थी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, वो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म थी, और जब उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा जाता है तो वो जनरल फॉर्म हो जाती है।
मुझे स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट बिल्ड करने थे ना बेटा। आगे बढ़ जाऊं प्लीज। आई नीड योर अटेंशन। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू completed square form and hence find the center and the radius. अब मैं आपके लिए सवालात लिख रहा हूं, उनको पहले कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उनका सेंटर और रेडियस निकालेंगे। तो आई थिंक आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे। All right, these are 4 questions on the screen. I want you all to first convert them in completed square form if possible. ये वाला जो है इसको completed square form में convert करना पॉसिबल तो है पर जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी 3 कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनका सेंटर और रेडियस निकालना है। प्लीज नोट कीजिए पहला वाला, अगर सीधी सीधी ये सिचुएशन है ना, तो बहुत क्लियर इंडिकेशन है, सेंटर है 0,0, रेडियस है √16 दैट इज 4। सो द फर्स्ट वन में देयर इज नो नीड टू गो थ्रू एनी हैसल। पहला वाला बिल्कुल सीधा सीधा है, x² + y² is 16। सो सेंटर इज 0,0, रेडियस इज √16 दैट इज 4। पहला वाला अगर सबको क्लियर है तो राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स। अच्छा एक और देख लें, फिफ्थ वाला। अगर लेट्स से आपको बोला है x² + y - 2²
is 25. तो इस केस में इसका सेंटर सीधा सीधा 0,2 और रेडियस अंडर रूट ऑफ 25 दैट इज 5 हो जाएगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? सिमिलरली अगर ये है तो सीधा सीधा 3,0 सेंटर हो जाएगा और रेडियस अंडर रूट ऑफ 4 दैट इज 2 हो जाएगा. प्लीज अब ये 3 कर लीजिए. इनको पहले कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करिए और फिर इनका सेंटर और रेडियस निकालिए. If you have started doing in the chat box, I'll give you 5-6 minutes to do this and then I'll start discussing. जी खैर मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि मुझे कितना इस स्टेज पे सिखाना है और कितना मुझे आगे की क्लासेस में सिखाना है. रेडियस नेगेटिव में तो आ नहीं सकता. शहीर बेटा प्लीज जो कर रहे हैं वो करें, आगे पीछे डिस्टर्ब ना करें. रेडियस नेगेटिव में नहीं आ सकता है. यूजुअली एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स अगर होंगे तो सेम होंगे ताकि वो कॉमन निकल के खत्म हो जाए. डिफरेंट नहीं होंगे. और डिफरेंट होंगे तो पहले एलसीएम निकाल के सबको सेम कॉमन करना पड़ेगा. बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी, लंबा हो जाएगा. बट आई डोंट थिंक दैट इज नीडेड एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न.
Those who are done, please start. जी question number 4 में definitely 2 common लेंगे. Those who are done, start sharing your answers in the chat box. Question 2, 3 and 4. सेकंड वाले में आप कह रहे हैं रेडियस नेगेटिव आ रहा है. नहीं आ रहा नेगेटिव, पॉजिटिव ही आ रहा है. चलें जी, मैं करना शुरू करता हूं. एक्स स्क्वायर माइनस 8x, वाई स्क्वायर प्लस 20y प्लस 110 इज 0. पहले इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करें. ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए की जगह x, बी की जगह 4, वाई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 110 इज 0. ए की जगह y, बी की जगह 10. यहां से यहां तक इज अ परफेक्ट स्क्वायर. x माइनस 4 द होल थिंग स्क्वायर माइनस 16. यहां से यहां तक इज अ परफेक्ट स्क्वायर. y प्लस 10 द होल थिंग स्क्वायर माइनस 100 प्लस 110 इज 0. x माइनस 4 स्क्वायर, y प्लस 10 स्क्वायर minus 16 minus 100 is minus 116 plus 110 is minus 16 is 0. X minus 4 square, y plus 10 square is equal to 16. Minus 6 is 6. Are you all with me? So this becomes 4 comma minus 10, which is the center of the circle, and the radius will be under root of 6. बेटा 6 ही लिखा है, 6 ही लिखा है. Minus 16 minus 100 is minus 116, minus 116 plus 110 is minus 6. Minus 6 equals to जो उस तरफ जाएगा तो positive 6. Center is 4 comma minus 10, radius is under root of 6. Am I clear, everyone? If it is clear, write clear in the chat box so that I move on to the next question. Next question is x square plus 6x plus y square minus 2y is equal to 6. A square plus 2ab plus b square minus b square y square minus 2ab plus b square minus b square is 6. A की जगह x, b की जगह 3, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 1 1. यहां से यहां तक इज अ परफेक्ट स्क्वायर. x plus 3 the whole thing square minus 9 plus y minus 1 the whole thing square minus 1 is 6. X plus 3 square y minus 1 square minus 10 is 6.
x plus 3 square plus y minus 1 square is 16. तो सेंटर हो गया -3, 1, रेडियस हो गया अंडर रूट ऑफ 16 दैट इज 4. I hope this is clear everyone. And last but not the least, 2x square plus 2y square minus 14x minus 10y is 163. पहले इसको रीअरेंज करें, x स्क्वायर के साथ x वाली टर्म लगा दें, y स्क्वायर के साथ y वाली टर्म लगा दें, is 163. 2 कॉमन निकाल लें, x स्क्वायर minus 7x plus y स्क्वायर minus 5y is 163. बेटा आमिना, ये अगर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा. हर सवाल में यही किया है. Is this clear now? X square minus 7x, y square minus 5y is 163 upon 2. A square minus 2ab plus b square minus b square. A square minus 2ab plus b square minus b square. Continue the equation. A की जगह x, b की जगह 7 upon 2, 7 upon 2, 7 upon 2. Y 5 upon 2, 5 upon 2, 5 upon 2. यहां से यहां तक x minus 7 upon 2 the whole thing square minus 49 upon 4. Y minus 5 upon 2 the whole thing square minus 25 upon 4 is 163 upon 2. X minus 7 upon 2 square, y minus 5 upon 2 square is 163 upon 2 plus 25 upon 4 plus 49 upon 4. 163 upon 2, 25 upon 4, 49 upon 4. X minus 7 upon 2 square, y minus 5 upon 2 square is 100. So center of the circle is 7 upon 2 comma 5 upon 2. Radius is under root of 100, which is 10. And this is the center. I hope this is clear and this makes sense to everyone. Shall we move on? सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? बेटा कैलकुलेटर से ही पता चलेगा हाउ इज इट 100.
कैलकुलेटर में आप डालें 163/2 प्लस 25/4 प्लस 49/4, तो आपका आंसर 100 आ जाएगा। अगर सेंटर का आंसर डेसिमल में आ रहा है तो यस डेसिमल में दे सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि रैशनल फॉर्म में यानी सर्डिकल फॉर्म में दिया जाए, सर्ड्स में दिया जाए, या फ्रैक्शंस में या सर्ड्स में। डेसिमल में देना बहुत मुनासिब नहीं है। Find the equation of the circle in both completed square form and general form. I want everyone to please hurry up and try this. पहले वाले में ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और दूसरे वाले में AB इज द डायमीटर। एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू योर सेल्फ। हरी अप। क्वेश्चन अगर स्पेसिफाई ना करे तो आप दोनों में से किसी भी फॉर्म में आंसर दे सकते हैं। If the question does not specify, it's your choice. You can give the answer in any form. प्लीज हरी आप जल्दी से ये दोनों क्वेश्चंस कर लीजिए। मीनवाइल मैंने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे एक हैंडआउट भेजा है विच इज योर होमवर्क।
प्लीज नोट कीजिए, जो पहला वाला है उसमें इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा दैट विल एक्ट एज रेडियस. सो आई होप डिस्टेंस का फॉर्मूला 9 minus 5 the whole thing square, 7 minus 4 the whole thing square, so it will be x minus 4 the whole thing square, y minus 5 the whole thing square is 25. ये आ गया कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म, और इसका जनरल फॉर्म बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 is 25. ये 25 कैंसिल हो गया. एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y is equals to minus 16. Am I clear, everyone? दूसरे वाले में अगर आपको बोला ये डायामीटर है, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी विल बी सेंटर एंड डिस्टेंस ऑफ ए बी divided by 2 will be radius. Yes or no? Ji Afan, that's not an issue. So midpoint will be 2 plus 8 divided by 2 minus 3 plus 5 divided by 2. 5 comma 1. So 5 comma 1 is the center of the circle. Agree? Once center आ गया तो आप डायरेक्टली रेडियस भी निकाल सकते हैं, और आप डायामीटर निकाल के फिर डिवाइड बाय 2 करके रेडियस भी निकाल सकते हैं. So 8 minus 2 the whole thing square, 5 minus minus plus 3 the whole thing square, the whole thing under root. अगर डायामीटर 10 है तो रेडियस 10/2 दैट इज 5 हो गया. तो x minus 5 the whole thing square, y minus 1 the whole thing square, 5 का square is 25. So if I convert it to expanded form or general form, x square minus 10x plus 25, y square minus 2y plus 1 minus 25 is 0, x square minus 10x, y square minus 2y, 25 minus 25 कैंसिल हो गया, प्लस 1 is 0. ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. इट इज योर चॉइस. आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आई होप सबको इक्वेशन ऑफ द सर्कल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल समझ में आ गई, इक्वेशन से कैसे कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में और कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म से कैसे जनरल फॉर्म में शिफ्ट होना है समझ में आ गया, एक्सपैंडेड फॉर्म से कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद टर्निंग पॉइंट और रेडियस कैसे निकलेगा समझ में आ गया. डायामीटर आया था ना बेटा, ए बी इज अ डायामीटर. डायामीटर को डिवाइड बाय 2 करते हैं तो रेडियस आता है. If everything is very clear, write understood in the chat box. All right. Now, if there is any question, please write that question in the chat box. Else, I will start winding up the class. सर आंसर जनरल फॉर्म में देना जरूरी है, आपकी चॉइस है. अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया है फॉर्म तो उस फॉर्म में जवाब देंगे,
और अगर सवाल ने स्पेसिफाई नहीं किया है कोई फॉर्म, तो हम कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में जवाब देंगे। अगर आपको डायामीटर दिया हुआ है तो डायामीटर का मिड पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। डायामीटर का मिड पॉइंट विल ऑलवेज बी सेंटर ऑफ द सर्कल। इफरा, थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा आइडियली डेसिमल में आंसर्स नहीं दें तो बेहतर है, बट दे देंगे तो चल जाएगा। जनरल फॉर्म इज द एक्सपेंडेड फॉर्म, कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म इज द अदर फॉर्म। रेडियस कभी भी नेगेटिव के अंदर अंडर रूट नहीं आएगा। रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। देख लीजिए क्वेश्चन 1। एक्सपैंड होते हैं ब्रैकेट तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ईमान, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर डिफरेंट नहीं होंगे, या तो बगैर कोएफिशिएंट के होगा या सेम कोएफिशिएंट होगा। सिर्फ आज की क्लास में आज का सवाल हो सकता है सकीना। हुजैफा, दैट्स गुड। आपने मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर निकाला तो सेंटर आ गया। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक इज रेडियस। इसीलिए पहले मैंने डेफिनेशंस एंड टर्मिनोलॉजीज कराई और फिर सवाल शुरू करवाए। The final answer for question number 1 is completed square form, general form. The answer for question number 2, general form, and this is the completed square form. बेटा ये अलग फॉर्म है, ये अलग फॉर्म है। यहाँ पे 25 कैंसिल हो गया तो इक्वल्स के बाद 25 कहीं नहीं आया बेटा। शेजर, मैं आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप पे ही जवाब दे चुका हूँ। सिंस आपने व्हाट्सएप पे सवाल पूछा है, मैंने आपको व्हाट्सएप पे ही जवाब दे दिया है। बेटा फर्स्ट पार्ट में कोई कैंसिलेशन नहीं हुई है। यहाँ पे 25 कैंसिल हो गया तो इसके बाद इक्वल के बाद -16 आया हुआ है, 25 नहीं आया हुआ बेटा। Is there any other question anyone wish to ask? If there is no question, write no question in the chat box and I will wind up the class. ऑलराइट, मैंने होमवर्क के लिए हैंड आउट क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा हुआ है, काइंडली वो कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जाएं जिए अपनी जिंदगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह।